श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी. Jaya Amitabh Bachchan. Thank you, sir. Sir, I wish to draw the urgent attention of this House to the crisis of acute shortage of qualified special needs educators in India. For millions of children with disabilities, it is a daily struggle for inclusive education. Today, recently, 50% of children with learning disabilities drop out before completing class 10. There is roughly one registered special educator for every 18 to 20 students with special needs enrolled in schools nationwide. As per the WHO guidelines, the requirement is 5 to 6 trained teachers for every 20 students. India's education system faces a critical challenge. Schools lack trained teachers to spot especially dyslexia early, a common learning disability affecting reading and writing in 10 to 15% of its 250 million school children, leading to undetected cases and wasted potential. Untreated dyslexia doesn't reflect low intelligence. Many dyslexic individuals excel in creative fields, entrepreneurship, and innovation, but without early intervention and guidance, these students face frustration, low self-esteem, and higher dropout rates. My request to the government, please prioritize WHO-aligned teacher training and infrastructure to deliver early screening, tailored support, which would unlock human potential, boosting literacy rates and economic productivity. Thank you. श्रीमान सुभाष चंद्र बोस पिल्लाई बिल्ली. Honorable Chairman, sir. Thank you, sir. ONGC is carrying out oil and glass exploration activities in Dr. B.R. Ambedkar Konaseema district of Andhra Pradesh. During these operations, a blowout incident was reported at Isumanda village, one of the ONGC wells, resulting in an uncontrolled release of gas and oil and causing concern among nearby residents. ONGC activated its crisis management team and senior technical experts to manage and contain the incident. Similar blowouts or major industrial incidents have occurred previously in Konaseema district. One Pasalupudi blowout in 1995, a major ONGC blowout, fire raged for 65 days, widely considered the largest in the history. Second, Davarpalli blowout in 1997, another significant ONGC well, blowout in the Kottapeta Mandal, flames climbed up to 100 meters. Third, Thandavapalli blowout in 2005, similar blowout contained within 4 hours. Fourth, Nagaram pipeline blaze in 2014, a Gale gas pipeline explosion in Mamidikudur Mandal killed 23 persons and injured 16 persons. Uppudi blowout in 2020, blowout near Uppudi village capped after 2 days. Other blowouts, mud incidents in 1992 and others including Komarada mud blowout. And 7, hydrogen sulfide leak at Kesanapalli 2025. A gas leak incident affecting workers, a child due to equipment and maintenance issues. In Konaseema and its vicinity, there have been at least 5 to 7 notable blowouts for major pipeline gas leak incidents over the last 30 years before 2026 event. The people of Konaseema facing many problems due to these blowouts. The nearby lands at the gas wells will sink and also sea will go behind. The GAIL or ONGC or oil companies are not providing job opportunities to the local educated youth. The cooking gas schemes also not being provided to the residents of Konaseema. I urge the Petroleum Ministry, necessary action may be taken for immediate financial assistance to the enhanced financial assistance to the affected farmers due to Irisumanda incidents, and also keep in mind that these efforts aim to control the blowouts, protect residents, and restore normalcy while assessing and mitigating impacts on local communities and agriculture. Thank you, sir.
श्रीमान सुजीत कुमार जी। Sir, I rise to highlight the need for corporate support for research in our country. Sir, Section 135 of the Companies Act mandates that companies that meet certain financial threshold have to spend on CSR. Today, sir, 27,000 companies are contributing over 34,000 crores towards education, healthcare, livelihood, skilling, sports, and rural development. Sir, many honorable MPs in the House will attest to the impactful work of CSR in their respective states or constituencies. Sir, the CSR framework has proven that when we align corporate success with national priorities through clear legislation, then India benefits tremendously. Sir, our Honorable Prime Minister has been inspiring us to work towards and to realize our vision of becoming a developed nation by 2047. But sir, for this to happen, robust investment in research and innovation is not desirable, it is essential. Sir, innovation and research are the foundation of any nation's progress, particularly a nation like ours, which is developing rapidly. And sir, the Parliament passed the Anusandhan National Research Foundation Act in 2023, for which I compliment the government. And year after year, in the annual budget, the Honorable Finance Minister has been earmarking funds for research, which deserves commendation, sir. But despite all this, sir, India today spends only 0.7% of our annual GDP on research, which is really pathetic compared to other countries. Sir, China spends about 2.56, US 3.5, Israel 5.2% of its GDP is spent on research. And also, sir, private sector research in Western countries, developed countries, is over 70 to 80% of the annual research spent in that nation. But in India, it's less than half of that. Only 36% of the total R&D expenditure in India is from the private sector. So, sir, A, R&D spend in India is low, and B, even on this low R&D spend, the private sector spend is even lower. So, sir, I propose that the government introduce Section 135A called Corporate Research Responsibility in the Companies Act, and to replicate our successful CSR model. And, sir, the framework can be straightforward. Companies meeting the existing CSR threshold, that is net worth over 500 crore, turnover over 1,000 crore, and net profit over 5 crore, would contribute 1% of their average net profit towards designated research activities. Sir, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान भारत के विकास का आधुनिक मूल मंत्र है, जो सैनिकों, अन्नदाताओं को, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के योगदान को सम्मान देता है. Sir, Lal Bahadur Shastri ji gave us the slogan Jai Jawan, Jai Kisan. Narendra Modi ji in 2019 added Jai Anusandhan in this slogan, sir. And ये नारा आत्मनिर्भर भारत और 21वीं सदी के ज्ञान आधारित विकास को दर्शाता है. Sir, hence I request the government to, sir, consider introducing Section 135 in the श्रीमान Companies Act. Dorji Sharing Lepcha। Honorable Chairman, sir, subject concern over Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana PMJSY guidelines in hilly regions. The PMJSY has played vital role in expanding all-weather road connectivity across rural Sikkim, improving access to health care, education, markets, and livelihood opportunities. However, several remote villages in the state continue to remain unconnected due to the rigid application of existing criteria, particularly population norms, Sikkim's unique conditions, its fully mountainous terrain, scarce settlement, prolonged monsoon seasons, and high susceptibility to landslides make connectivity not essential for development, also crucial for national security, that nearly 90% of the state boundary with China, Bhutan, and Nepal. The current population threshold of 250% for PMJSY eligibility excludes sparsely populated, genuinely isolated habitation. A reduction of threshold to 150% is requested to ensure equitable for all rural communities. The PMJSY road have completed 7 years, face rapid deterioration due to heavy rainfall and need timely upgradation, strengthening and resurfacing to maintain connectivity. In region with high rainfall, many rural areas, the existing PMJSY carpeting norms of a 20 mm thin layer has now early deterioration. This thin layer is insufficient to intense monsoon
condition, leading to rapid wear and reduced lifespan. Upgrading carpeting to thicker, higher specification layer will significantly enhance longer-lasting roads. Such improvement will contribute to the long-term sustainability and reliability of roads, reducing maintenance need and improving connectivity in vulnerable regions. The fragile Himalayan terrain necessitates protection measures in all PMJSA work, including retaining and breast walls, during system and reverse slope stabilization structure capable of withstanding high-intensified rainfall. In view of above, I request central government to kindly look into these grievances. Thank you. Shriman Ajit Kumar Buyanji. Thank you, Chairman sir. I would like to speak in my own language, Ohomia. 1942 চনৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ সময়ত ব্ৰিটিছ আমেৰিকান সৈন্য কঢ়িয়াই নিয়া ৰেল বগৰোৱাৰ বিস্ময়কৰ সঁচা ইতিহাস। 1942 চনৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ চূড়ান্ত স্তৰ হ'ল ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন। সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ জুৰি স্বাধীনতা আন্দোলনৰ নেতাসকলক কাৰাৰুদ্ধ কৰাৰ পিছত এই স্বাধীনতা আন্দোলন তাৎক্ষণিকভাৱে ৰূপান্তৰিত হ'ল ব্যাপক গণসংগ্ৰামলৈ, য'ত প্ৰায় প্ৰতিজন ভাৰতীয়ই অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। এই গণসংগ্ৰামৰ দাবী আছিল যাতে ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যবাদীহঁতে ভাৰত ত্যাগ কৰে আৰু একে সময়তে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত ফেচিবাদৰ বিৰোধিতা কৰিও যুদ্ধত সৈন্যবাহিনীৰ সহযোগিতাৰ বিৰোধ কৰে। ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰ দৰে অসমৰ আন্দোলনকাৰীসকলেও বিভিন্ন ঠাইত দলং আৰু চৰকাৰী কাৰ্যালয় আদিত অগ্নিসংযোগ কৰা, সৈন্যবাহিনীলৈ ৰচদ পাতি বন্ধ কৰি দিয়া আদি কামবোৰ কৰিছিল। পৰিণামস্বৰূপে সাধাৰণ মানুহৰ ওপৰত সৈন্যবাহিনীৰ লগতে পুলিচৰ অমানুষিক অত্যাচাৰ দিনে দিনে বাঢ়ি আছিল। সাধাৰণ মানুহৰ ওপৰত সৈন্যবাহিনীৰ এনে জনবিৰোধী নিৰ্মম অত্যাচাৰৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ কংগ্ৰেছৰ স্বাধীনতাকাংক্ষী অগ্ৰণী ভলণ্টিয়াৰসকলে সৈনিক কঢ়িওৱা ৰেল বগৰোৱাৰ সিদ্ধান্ত পৰ্যন্ত লৈছিল। এই সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ সেই সময়ৰ নগাঁৱৰ কংগ্ৰেছী নেতা আৰু কৰ্মীসকলে গুৱাহাটীৰ ওচৰৰ কোনোবাখিনিত কামটো কৰাত অৱশেষত খাটাং কৰিলে আৰু ইয়াৰ বাবে চূড়ান্তভাৱে নিৰ্বাচন কৰিলে গুৱাহাটীৰ পূব পিনে থকা পাণবাৰী আৰু পানীখাইটি ৰেল ষ্টেচনৰ মাজৰ নলঘুলি নামৰ ঠাইডোখৰ। এই অভিযানৰ আগভাগ লৈছিল স্বাধীনতা যুঁজাৰু মুক্তি বাহিনীৰ অগ্ৰণী নেতা মহদানন্দ দেৱগোস্বামী আৰু তেখেতৰ 10জন সহযোগী যোদ্ধাই। এইসকল নগাঁৱৰ বিভিন্ন ঠাইৰ আছিল আৰু মহাদানন্দ দেৱগোস্বামী নিজে আছিল মায়ঙৰ বাসিন্দা। মৃত্যু বাহিনীৰ এইসকল যোদ্ধাই 1942 চনৰ 24 নৱেম্বৰ তাৰিখে সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা 8 বজাৰ ভিতৰত বৰ্তমানৰ নাগালেণ্ডৰ তাহানিৰ অসমৰ ডিমাপুৰলৈ এখন বিশেষ ৰেলযোগে প্ৰায় 700ৰ পৰা 1000জন ব্ৰিটিছ আমেৰিকান সৈনিক কঢ়িয়াই নিয়া ৰেলৰ চিৰি লাইনচ্যুত কৰি গোটেই ৰেলকেইখন দীঘাৰু নৈ এটা ঘুলিত বগৰাই চালক পৰিচালকৰ লগতে আটাইবোৰ সৈনিককে নিহত কৰিছিল। ই আছিল ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ এক ব্যতিক্ৰমী ঘটনা। সম্ভৱতঃ অসমতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, অথচ যিটো ঘটনা আজিলৈকে ভাৰতৰ কোনো বুৰঞ্জীত লিপিবদ্ধ নহ'ল আৰু অন্ধকাৰতে থাকি গ'ল। উল্লেখযোগ্য যে ৰেলখনৰ ইঞ্জিনটো আছিল নলঘুলিৰ ৰেল আলি আৰু দ পিটনিৰ তলত পোত গৈ আছে বুলি স্থানীয় ৰাইজে দাবী কৰিছে। স্বাধীনতাৰ এই বিৰল ঘটনা ভাৰতৰ কোনো বুৰঞ্জীত উল্লেখ নাথাকিলেও জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই লিখি উলিওৱা श्रीमान हर्ष महाजन जी, श्रीमान राजीव शुक्ला जी। धन्यवाद सभापति जी। अच्छी अश्विनी वैष्णव जी अच्छा इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं। माननीय सभापति जी, मैं आज इस सदन में एक ऐसे मुद्दे की ओर आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूँ जो न सिर्फ समाज की बातचीत को प्रभावित कर रहा है बल्कि हमारे लोकतांत्रिक ढांचे, हमारे युवाओं की मानसिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक विश्वास की नींव को भी हिला रहा है। बात सोशल मीडिया की है और उससे भी ज़्यादा सोशल मीडिया की जवाबदेही की है। आज स्थिति है कि कोई भी कुछ लिख देता, किसी पर भी आरोप लगा देता, किसी की भी प्रतिष्ठा को एक ही पोस्ट में तार तार कर देता है। और माननीय सभापति जी, एक बार कोई चीज़ वायरल हो गई तो उस झूठ को वापस लेना लगभग असंभव हो जाता है।
न प्लेटफॉर्म जिम्मेदारी लेते हैं, न लिखने वाला सामने आता, और उसके बीच में पिसता एक आम नागरिक, उसकी इज्जत, उसका करियर और उसका मानसिक संतुलन। सभापति जी, हाल ही में गाजियाबाद में 3 नाबालिग बच्चियों की कोरियन गेम्स देखते हुए आत्महत्या की दर्दनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस मामले में यह सामने आया कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन कंटेंट से जुड़ी अफवाहें, अतिरंजित नैरेटिव और डिजिटल दबाव ने उनकी मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डाले। सवाल यह नहीं कि दोष किसका था, बल्कि सवाल यह है कि जब एक नाबालिग लगातार डिजिटल भ्रम, अवास्तविक अपेक्षाओं और ऑनलाइन दबाव के बीच टूट रहा होता है, तब उसे बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या उस प्लेटफॉर्म की नहीं जो ऐसे कंटेंट को बढ़ावा देता है? सोचिए कैसी विडंबना है कि हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां हथियारों पर तो कानून है, जहर पर कानून है, सड़क पर गाड़ी चलाने पर कानून है, लेकिन सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने की कोई ठोस जवाबदेही तय ही नहीं की गई है। कंपनियों के एल्गोरिदम यह तय करते हैं कि हमें क्या देखना है, लेकिन यह बताने की जिम्मेदारी उनसे कोई नहीं मांगता कि किस आधार पर किसी झूठ को लाखों लोगों तक पहुंचाया गया। कौन सी व्यवस्था है जहां प्रभाव है, पहुंच है, लेकिन जवाबदेही नहीं है? आज यह सदन इस प्रश्न पर विचार करे कि क्या सोशल मीडिया पर आचरण के स्पष्ट नियम होने चाहिए या नहीं? क्या यह स्वीकार्य है कि करोड़ों भारतीयों तक पहुंचने वाले प्लेटफॉर्म कम्युनिटी गाइडलाइंस के नाम पर सब कुछ अपने हिसाब से चलाएं और देश की संसद तमाशा देखती रहे? क्या यह उचित है किसी व्यक्ति की छवि नष्ट की जाए, किसी महिला को लगातार ऑनलाइन उत्पीड़न सहना पड़े, किसी किशोर की मानसिक सेहत बिगाड़ी जाए?